हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टॉपिक कैरोटिड बॉडी ट्यूमर्स। So before starting, I would like to thank Chandana Shri Ma'am for sharing the wonderful notes with us. These are very helpful for revision, and I have shared the link for the notes in the description below. You can download from there and study. Thank you. So we'll start today. Let's get started. Carotid body tumors. So these are the rare tumors, and these arise from the carotid body. So these are near the bifurcation of the common carotid, which is a chemosensitive tissue. It detects changes in the pH temperature of the body and helps in maintaining it. So carotid body tumors, these are more commonly sporadic than hereditary. 10 to 30% are hereditary and associated with autosomal dominant. मतलब अचानक से ज़्यादा कॉमन है. ट्यूमर्स वर्सेस हाइपरप्लेजिया, कि ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर हो, कभी कभी उसमें स्वेलिंग है तो हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है. और ये कब होता है? हाइपोक्सिया के स्टेट में, जब सीओपीडी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या हाई एल्टीट्यूड का सिचुएशन हो, जब प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सीमिया हो रहा है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपरप्लेजिया causing hypoxia, COPD, congenital heart disease and high altitude. Age group commonly involved is 5th to 7th decade. 50 से 70 के 50 to 80 के एज ग्रुप में कॉमनली होता है. हाईली वैस्कुलर ट्यूमर, ब्लड सप्लाई इसका अच्छा होता है तो बहुत ब्लीड करता है ट्यूमर ऑपरेशन के टाइम पे, तो हाईली वैस्कुलर ट्यूमर. सिंथेसाइज न्यूरोपेप्टाइड्स एंड एंजाइम्स, न्यूरोपेप्टाइड और एंजाइम बनाता है जिसको डिटेक्ट किया जाता है आईएचसी से. इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, आईएचसी डिटेक्ट किया जाता है आईएचसी से. 5 to 7% आर मेलिग्नेंट एंड सबसे ज़्यादा रिस्क होता है यंग पेशेंट में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है. मैक्स रिस्क इन यंग पेशेंट्स विद फैमिली हिस्ट्री. देन वी कम टू द स्प्रेड. स्प्रेड इज लोकली इन्वेजिव. इट्स अ लोकली इन्वेजिव ट्यूमर, आसपास स्प्रेड करता है. एडवेंटिशिया ऑफ द एडजेसेंट कैरोटिड वेसल along with posterior aspect of bifurcation, वहां पे वो स्प्रेड कर रहा है. widening the angle between the ECA and the ICA, that is playing और लायर साइन, जो दो वेसल्स का डिवीजन है, एंगल है ECA ICA का, उसके बीच में ये टिश्यू होता है और वहां पे ट्यूमर होता है और वो एक दूसरे को फैलाता है, स्प्लेइंग करता है, जिसका नाम है लायर साइन. इमेजिंग में भी ये बहुत अच्छे से दिखता है CT/MRI में. ठीक है. देन इट एनकेसेस द मेन ट्रंक प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ECA. It does rarely involve ICA because ECA is the vascular supply to the carotid body, and it may spread to local lymph nodes when it is malignant. Now we'll see the clinical feature or presentation. So these are generally asymptomatic masses, मतलब कोई symptom नहीं है. कहाँ पे? Near the angle of mandible, angle of mandible. Fixed mass and no longitudinal movement. ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा, साइड में थोड़ा, साइड टू साइड थोड़ा मूव करेगा. फर्म स्मूथ लोबुलेटेड. इट में ट्रांसमिटेड कैरोटिड पल्सेशन आ सकते हैं, ट्रांसमिटेड कैरोटिड पल्सेशन. 30 to 40% में ऑडिबल ब्रू आ सकता है, साउंड आ सकता है उस स्वेलिंग से. क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली हाइपोग्लॉसल, वेगस, लैरिंजियल, सिंपैथेटिक चेन. सो 12th, 10th and branch of 12th, laryngeal, sympathetic chain causing, sympathetic chain involve हो रहा है तो हॉर्नर सिंड्रोम होगा. Then we have large tumors extend to the base of skull, bulge in the lateral wall of the oropharynx, deviation of soft palate. Then sometimes TIA, usually positive if there is associated carotid plaque. तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आ सकता है. ठीक है. सो वी वर डिस्कसिंग हॉर्नर सिंड्रोम. Sorry for the delay. So it was meiosis, anhidrosis and ptosis.
constriction of pupil, meiosis, anhidrosis, facial sweating, lack of facial sweating, and ptosis, that is drooping of eyelid. Then we'll come to investigation, what we do. So the non-invasive method is the carotid duplex, which will give us a rough picture involvement of carotids. Then we have carotid angiography, selective carotid angiography, which is the gold standard but is invasive. It helps in demonstration of the bifurcation of carotid, oral size, extent and vascularity of the tumor, major arterial supply of the tumor, presence of aberrant ascending cervical vertebral branches of the vessels, then demonstration of plaques in the carotid. It will also show us the presence of other concomitant cervical paragangliomas and pre-op embolization if that is needed or is necessary. Then we have MRI CT, which is for giving reconstructed picture and is non-invasive. Then we have the classification, that is Shamlin's classification, where group 1, that the tumor can be dissected freely from the wall of the carotid artery. So these are less than 5 centimeter, as we can see in the diagram that it is separate, quite separate from the structures. In the group 2, tumor is partially surrounding the circumference of the carotid. So you can see in the diagram it is touching the carotids and partially encasing it. And in the group 3, it is very intimately adherent to the entire circumference of the carotid bifurcation, and it is almost fully covering. So the group 2 and 3, they require preoperative embolization, without which it would be difficult to manage. So management would be surgical excision with or without preoperative embolization of feeding vessel, depending on the group. Group 2 and 3 will definitely need preoperative embolization. It can be done even in one to avoid bleeding. Complication is bleeding, that is most common. Then TIA, stroke, cerebrovascular complication, cranial nerve deficit if there is a cranial nerve damage during surgery. Then if needed, radiation therapy, which could be adjunct, pre-op radiotherapy in case of bulky and inoperable tumor, and then primary radiotherapy in case of recurrence or where the surgery is contraindicated or not feasible. So this was all about carotid body tumors, and thank you for watching. Keep studying, keep growing, and see you in next video.